ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پر ولولہ دل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر منزل کی۔ ماشاء اچھی حاضری۔ Nice setup. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Amir Sahab, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fali, Aho, Tongasi, Bahita, Izani, Firni, Madagascari, Izani. Fali, Aho, Mahita, Ario, Pakama Bila, Ahandi, Mahalo, Ito. Enga, Aina, Hotaini y Andriana Manrakriva Anario. Amin. So I thought I'd have a go at Malagasy. So if there's a mistake in there, please forgive me. It is traditional that when we have a Jalsa Salana of any country, that it is in the language of that country that we, in Jamaat Ahmadiyya, we give the first and most important part of the Jalsa Salana. And this is the tradition that goes back to Qadian from the first Jalsa Salana in 1891. And by the grace of Allah, this Jalsa is held around the world, in 220 countries of the world by the grace of Allah now. And we are a great example here today, of the gathering that's here today, that even in the country, an island, remote as it may be, in the Indian Ocean, in Madagascar, that we're holding this, by the grace of Allah, this beautiful Jalsa that you're holding here today. And I'm very blessed and honored that you have asked me to speak here today. So I don't have much to say because I wasn't expecting to speak today, but the only message I have, and I need every Ahmadi that is here should be very clear that we're only here because Allah has blessed us with following the promised Messiah Islam. We would not be here, we would not be in this country unless we were members of the Ahmadiyya Jamaat and we had accepted the Masih of the time. And the Masih is here to save the world, not just save Pakistan or India or Africa or England or Germany. He is here to save, the Messiah has been sent to save the world. And we know the problems that are in the world now, we're in a crisis, there's conflict wherever we see. So the only solution, and we know this is the only solution, is that we accept the promised Messiah and his teachings of love, peace, and hatred for none and love for all. This is the teaching that we must spread here in this island. And you are the ambassadors, you are the beginning of this revolution in Madagascar, inshallah. You will bring love to this island, you will bring education to this island, you will bring their children to hope, which they're lacking at the moment. I see this country with great opportunities. I see this country with loving people, with nice people who are open to, they're like sponges, they're waiting for someone to give them this spiritual water that will revive them and save them. And
and bring them out of the turmoil that they're in. I see the children without shoes. I see people malnourished. I see the difficulties that people face in this country. So one of the reasons I'm here with Dr. Saab, Dr. Al-Dhubi Saab, is because we're hoping that we can instill some life into the business side of things, but more importantly that the spiritual aspect of the Ahmadiyya Jamaat and its teachings, that we must do our very best to get this across to the rest of the people. So मैंने कुछ अल्फाज जो इंग्लिश में कहे हैं, पहले तो जो मलगासी में बात की मुझे तारी मैंने गलत किया सही किया, लेकिन जो मैंने उनको कहा था उन्होंने लिख दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो सही पढ़ा जाए, तो अगर गलती होगी तो दूसरों को कह देना कि मुझे माफ़ कर दें। लेकिन असल बात जो मैंने आपको कहनी थी कि हम यहाँ आए हैं अहमदियत की वजह से, हम अहमदी हैं और हमारा मकसद यही है कि दुनिया में अमन फैलाना। हमारा मकसद है तालीम, तरबियत और तबलीग जो है, उसका मकसद यही है कि इंसान में अल्लाह ताला का प्यार और उसके दूसरे और इंसानों के लिए उसका दर्द हो उसके दिल में, और उनके लिए बेहतरी के लिए आप काम करें। इसलिए मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो यहाँ भेजा है, आपके ख़ास इस मकसद के लिए भेजा है कि आप अपनी तालीम जो है, तरबियत जो है, जो तबलीग करते हैं, इन लोगों की तरफ लेके जाएं, ताकि इनको अल्लाह ताला की तरफ रजूआत हो उनकी, और आपको इसका स्वाब मिलेगा, आपका सदका जारिया होगा आपके लिए, आपके औलादों के लिए, और ख़ासकर इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क को बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि गुर्बत यहाँ इस हालत से, मतलब बहुत बुरी हालत है यहाँ इस मुल्क की, और इसको ऐसे ज़रूरत है कि जैसे पानी आप लेकर जाते हैं कोई प्यासे के लिए, अहमदियत इनके लिए वो पानी है। आपने पूरी कोशिश करनी है, आपको यहाँ जो टाइम मिला है आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ये आपको दोबारा नहीं आएगा। आइंदा जो आएंगी नस्लें वो आपका बहुत याद करेंगी, आपको अच्छे ख्यालात से सुनेंगे। आप पहले जनरेशन में हैं, मुझे पता है यहाँ 40 साल से जमात कायम है, लेकिन कुछ जो नीवी अभी आप कुछ लोग आए हैं, और ये जो मुखालफत हमारे खिलाफ पाकिस्तान में है, इसका मकसद ही यही है। अल्लाह ताला ने वो मुखालफत पैदा ही इसलिए की है ताकि हम बाहर जाएँ और जमात अहमदियत दुनिया में फैलाएँ। ये नहीं कि हमारे पिंडों में, पाकिस्तान में, या जहाँ शहरों में हम रह रहे हैं वहीं बस हमारी मस्जिदें, वहीं हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, वहीं हमारे बच्चे पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। लेकिन ये जो बाहर आना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें बहुत ही बरकतें हैं। मैं खुद ईस्ट अफ्रीका के, मेरे दादा परदादा नाना वो ईस्ट अफ्रीका के रहने वाले हैं, मेरी भी पैदाइश वहाँ की है, लेकिन उस कुर्बानी जो उन्होंने की है वहाँ जाकर, उसकी वजह से हम सारे इधर आए हैं, यूके में आए हैं, अमेरिका, कनाडा में जो बड़ी जमातें कायम हुई, वो सारी ईस्ट अफ्रीका के लोग पहले गए हैं। तो वो देखें उस छोटी सी जमात जो थी ईस्ट अफ्रीका की 1910 में, वो जाकर दुनिया में फैल गई सारा। तो आइंदा इंशाल्लाह लोग कहेंगे यहाँ ये मदरासी थे, ये मलगासी थे जो सारे मेलागर यहाँ से गए थे, तो यहाँ से वो उन्होंने फैली सारी जमात का नाम फैलाया सारी दुनिया में। इसलिए आप अपने आप को ये मामूली चीज़ ना समझें, आपका बहुत बड़ा, आप छोटे मतलब पैमाने में लोग, यहाँ बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पर थोड़े से लोग आप क्या कर लेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ लोग प्यासे हैं, आप ये इंग्लिश में कहते हैं लो लाइंग फ्रूट्स, ये फ्रूट है, इनको हमने लेना है, इनका पूरा फ़ायदा उठाना है हमने, इनको हमने जमात लानी, इनके अमन फैलाना, इनकी तरबियत तालीम फैलानी, इनको बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला आपको इसकी हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, और अल्लाह ताला आपको खलीफत मसीह ख़ाम सैयद ताला बिस्मिल अज़ीज़ की इताअत करने में, उनके साथ जो वो कहते हैं हर जुमे को सुने, उनके खुतबात सुने और अपने बच्चों को वो सुनाएं, क्योंकि अगर आप उनसे दूर हो गए तो फिर आपको कोई फ़ायदा यहाँ नहीं करेंगे। उनकी जो भी बातें आप सुने बड़ी गौर से सुने, क्योंकि ये एक ख़तरा है कि आपकी औलादें जमात से दूर ना हो जाए। उनको बहुत करीब रखें, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखें। आखिर में शुक्रिया, मुझे भी और सब के लिए मुझे भी दुआ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। Dia Matu Muhammad Nasir Khan, dia
Manita iti Felina Madagascar ai Nahita Izivio Pikamana Hanimawe ai Izidia Ngatakawe Nizaka Namaki Okoya Natawu Isidisu dia Azabadi Izidia Nanapiwe Nidina Amtum Sika Heta Pikamana Sadama Mahadidia Tukuni Mamielini Haftani Fiwana Islam Adam ai tukuni mitutani Fiwana Chara Mituna ai Nuzana Ehu Pikamana Heta Dia Nyaya Kamana Zatra Izan Izidia Nikata Fanigasa Nidia Aviani Afekni Est ai Tamni Tamafuru Civilizado si ai Diatani Israel ai Amzor Ifa Govetaka na Govil Ireo Tahana Israel Easy Tahana Israel Ani Amita We Nuni Fashamani and then Hari Amhilani New Filona Slam Eva Ninus in Anara and Drusu Israel Ari Ingani Israel Tenagasi Isaia and Drusu Gasa Pikamana Chana ni Tahana Israel and Drusu Kua Izidia Nanapi Amzan Amu Fotona Fenu Evo Adi Amni Tuela Heta Isa Isika Tukuni Mampielini Hafatra Fenu Fiadana Where Vitiavana Manuheta Chifam Alana Nisa Ni Hafatra Ni Fenu Fiadana Nabi Laimisian Panatina Desire Amzao Izao Magatakani and Yamadu Muhammad Musalim Abdulubi Ba Handrai Desa. Muhammad. Now I would invite Mukaya Muhammad Musalim Abdulubi Sahib to say some words. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. I am coming from Syria and I want to tell you that by grace of Allah, Khalifa Masih Sani visited Syria in 1925. And he had meeting with the mullahs and scholars there, and he wanted to pass the message of the promised Messiah. And in that time they told him that, you can go to any other country, but you cannot do anything here in Syria. And he told them that there is sign from the promised Messiah, Muhammad, Allah told him that yusalluna alayka sulaha al-arab wa abdal al-sham, that from Arabs and abdal al-sham, there will be, from Syria, there will be people who will pray for you and say salam. And alhamdulillah, I am and all Ahmadis in Syria, they are sign of the truth of the promised Messiah. And what Khalifa Masih Sani started in Syria, alhamdulillah, it has been grown. And mashallah, there was time that we were 2,000 people in Syria, all of us Syrian. And now because of the crisis, we are around 600. And the Sadr Sahib of Syria and all the Syrian asked me to pass their salam to you. So, assalamu alaikum from Syria and from Abdal al-Sham. And please pray for them. And please remember Khalifa Masih Khamis in your prayer and his family. Because of his leadership, alhamdulillah, we are enjoying the peaceful and the way how we are going all around the world with love and helping everyone. So, Jazakumullah, and may Allah make it Jalsa Mubarakah for all of you. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
یار ازل کو خود میرے دل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرول ولا دل کی تلاش، میں وہ مجنوں ہوں کہ جس کے دل میں ہے گھر یار کا، میں وہ مجنوں ہوں کہ جس کے دل میں ہے گھر یار کا، اور ہوگا وہ کوئی جس کو ہے محمل کی تلاش، اور ہوگا وہ کوئی جس کو ہے محمل کی تلاش، گلشن عالم کی رونق ہے فقط انسان سے، گلشن عالم کی رونق ہے فقط انسان سے، گل بنانے ہو اگر تو نے Muslim money around the world, we were still the first to do that. Can I tell you one thing? It happened that I was in South Korea, there was an exhibition, and all the countries of the world was there. But the only stool who was, talking about religion, it was our Ahmadiyya Mosque, Ahmadiyya Jama'ah, it was talking, and even the Saudi was there. So we were representing not only Islam, representing all the religion. Yes, Alhamdulillah. And just in front of the section of the Muslim side and Khilafat, we have the replies to the allegations about polygamy, about extremism, and we have included the verse Man qatala nafsan bighayri nafsin, and the hadith as well, and about parda. So here people ask why the women you keep them hidden and you don't let them go out. And here it was about MTA. Yeah. So here, All the things that you mentioned about MTA. that's not relating to the Muslims Bishwari, that's all I'm saying. Connected to that. So when we explain to them, Yeah. even in the Bible it is written Yeah. that in the last book Mukashfa that he would speak and Yes, in many exactly, languages. exactly. May Allah make blessing for this Jama'ah and for this country. Please remember us in your prayers. Bless you, you've done a fabulous job. So we've got to place a lot for you. میں ادو میرا زمینی اس لیے میں فلک پر اڑ رہا ہوں، اس کو ہے بل کی تلاش، میں فلک پر اڑ رہا ہوں،
اس کو ہے بل کی تلاش، ہم نشیں تجھ کو ہے ایک پر امن منزل کی تلاش۔